Now, the next topic is states of matter. According to physical classification, matter is divided into solid, liquid, and gas. First, we study about properties of solids. As you know, solids have definite shapes and volume. Spaces between the particles of the solids is very less. बहुत पास पास होते हैं सॉलिड के पार्टिकल्स और उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो बहुत ज़्यादा होता है. इट इज़ मैक्सिमम. द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स इज़ देयर फॉर मिनिमम. दे आर लीस्ट कंप्रेसिबल एंड देयर रेट ऑफ डिफ्यूजन इज़ लीस्ट. मतलब जब किसी सॉलिड को हम लोग लिक्विड में डालेंगे तो वो डिफ्यूज़ बहुत धीरे धीरे होता है. मतलब उसमें बहुत देरी से घुलता है. डिज़ोल्व बहुत देर में होता है वो. नेक्स्ट, properties of liquids. Liquids have no definite shape, but when we introduce some liquids in a container, the liquid will take the shape of it itself. The space between the particles is intermediate. मतलब थोड़ी थोड़ी दूर पे होते हैं. The force of attraction is also intermediate. The movement is also intermediate. They are less compressible and the rate of diffusion is more than solids. Okay. Then gases, they don't have any shape or volume, but they occupy the space of the container. अब जब हम कंटेनर में गैस को फिल करेंगे तो गैस के जो पार्टिकल्स होंगे वो वॉल्स पे ना, कंटेनर की वॉल्स पे फोर्स एक्सर्ट करते हैं. ठीक है. द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स इज मैक्सिमम एंड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड मूवमेंट इज़ ऑल्सो मैक्सिमम. दे आर मोस्ट कंप्रेसिबल क्योंकि जब पार्टिकल्स बहुत दूर दूर हैं तो उनको हम लोग कंप्रेस करके लिक्विड या सॉलिड बना सकते हैं. ठीक. और दैट्स ऑल्सो द रीज़न द डिफ्यूजन इज़ ऑल्सो मोर देन सॉलिड्स एंड लिक्विड्स. As in the diagram, you can see the difference between the particles of matter of gas, liquid and solid. Okay. Now, change of state. When one state is converted into another, that phenomena is called change of state. For example, solid is heated to get liquid form and liquid is superheated to change it into gas. And vice versa, gas is cooled to get liquid and liquid is supercooled to get solid. For example, ice is heated, then it changes into water, and when water is heated it changes into water vapor. And for reverse reaction, for the reverse process, when steam is cooled it changes back into water, and when water is freezed it changes into ice. Okay, the schematic shows the changes of state in matter. Now there are some processes. First is melting. When a solid is heated, the particles begin to vibrate with greater speed and begin to move very freely. मतलब जब हम उनको सॉलिड्स को हीट करते हैं उनके जो पार्टिकल्स होते हैं वो इधर उधर जाने लगते हैं, उनका मूवमेंट बढ़ जाता है तो उनमें काइनेटिक एनर्जी आ जाती है. अब जब पार्टिकल्स दूर दूर चले जाएंगे तो वो सॉलिड क्या होगा, लिक्विड में चेंज हो जाएगा. ओके, दिस इज कॉल्ड मेल्टिंग. Melting is based upon the latent heat of fusion. The amount of heat energy required to change 1 kg of a solid into liquid at atmospheric pressure is latent heat of fusion. The diagram shows the experiment for latent heat. Next is boiling. When a liquid is heated, its particles begin to move even faster. Okay, and it starts changing into gas. It is a bulk phenomena, that is, it takes place throughout the constituents of the liquid. मतलब लिक्विड के अंदर भी ये प्रोसेस होगी और लिक्विड की सरफेस पे भी ये प्रोसेस होगी. ओके. द टेम्परेचर एट विच लिक्विड स्टार्ट्स बॉइलिंग इज कॉल्ड इट्स बॉइलिंग पॉइंट. ओके. And the amount of heat energy required to change 1 kg of a liquid into its gas phase is called latent heat of vaporization.
That diagram shows the vaporization of water, and this diagram shows determining of boiling point. Now, what if we want to skip one state? That is, we directly want gas from solid or solid from gas. This can be done by sublimation. This change of state is directly from solid to gas without going in intermediate state is called sublimation. There are three examples: camphor, ammonium chloride and naphthalene balls. The diagram shows the sublimation of mixture of ammonium chloride and sodium chloride. The gaseous ammonium chloride is collected on the cotton. That's all. These are the effect of temperature that we have on states of matter. Thank you.